हेलो एवरीवन, मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? एक साउंड चेक दीजिए प्लीज। प्लीज अपने कैमरा को ऑन कीजिए। दिस इज वेरी एसेंशियल। ये तो मुझे, इनफैक्ट लेट मी डू दिस। अगर आप कैमरा ऑन रखोगे तो मैं आपको, यू कैन टॉक टू मी। आप अनम्यूट करके हम बात कर सकते हैं, बट यू हैव टू स्विच ऑन योर कैमरा। फेयर डील? नमस्कार मानवेंद्र। फेयर डील, बट उसके लिए आपको कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। हाय साक्षी। मोर फोक्स प्लीज। हाय अश्विनी। I'm seeing you for the first time. Hi, Bandhavya. Always good to see you. Hi, Neha. Hi, Akbar. Hi, Sanchit. Okay, before we start, and this is something I was thinking कि हर क्लास के पहले एक डिस्कशन करेंगे, and you can unmute yourself and talk. Okay, what is what is a one big observation, last few days में, मतलब लास्ट क्लास के बाद, जहां आपने जनरेटिव एआई से कुछ अच्छा किया या किसी ने आपके जनरेटिव एआई यूसेज के बारे में कुछ कहा, कुछ कोई शेयर करना चाहेगा? एनीबडी वांट्स टू शेयर? आपने अपने काम में जनरेटिव एआई यूज किया, आपने किसी को बोला कि नहीं बोला? बोलिए, कौन बोल रहा है? हेलो मैम। एनी ऑब्जर्वेशन? हाय हेलो। सचिनंदन। हाय, हाँ प्लीज सर। हाँ, इधर जो कोलकाता में बहुत बड़ा रथ यात्रा चल रहा है। तो इसमें मुझे कुछ यहाँ पे एक सेवा मिला है। जो जो पूरा पूरा बड़ा जो प्रोसेसन होता है, तो उसमें जितना भी अकाउंट का कुछ पेमेंट करना है, तो उन लोगों को भी पेमेंट करना है। जैसे बैंड पार्टी होगा, बहुत सारे टेबलो होता है, जो रास्ते में रंगोली बनाते हैं। तो इसमें जितना भी मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो उनको एक बैलेंस शीट, उसको एक फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना पड़ता है। तो मैं जितना भी एक छोटा छोटा करके मैं लिख के रखा था। तो उसमें चैट जीपीटी और गूगल एआई टूल्स के माध्यम से मैंने एक प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्ट में बना के मैंने हायर अथॉरिटी में सबमिट किया। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा लगा सुन के। रियल लाइफ एप्लीकेशन है ये, राइट? आपका टाइम सेव हुआ, आप अपने टाइम से और कुछ भी कर पाए, और आपको कंट्रोल भी था कि आपका ये एनालिसिस कैसा था। दिस इज वेरी गुड, गुड टू हियर दिस सचिनंदन। These stories are very inspiring for me, right? Real life story, how you generative AI is changing your life, right? Because you see, that is the whole aim, right? That is the whole aim. Anyone else wants to share anything? Any mother wants to share कि teaching में help हुआ है? Anyone else? No? Okay, so we will keep this forum open for this discussion right beginning, right in front, beginning the class, कि कोई अगर observation share करे, because हमें हमें ऑब्जर्व करना है, राइट? बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑब्जर्व करके हमें डॉक्यूमेंट करना है। कहाँ, कौन से सोशल प्लेटफॉर्म में डॉक्यूमेंट करना है? Yes, everybody's, I can hear everybody saying LinkedIn. Yes, please document your learning, your observation, your success, and more importantly, your failures. Right? We have a habit of, मतलब we have a habit कि हम सक्सेस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली सेलिब्रेट किसे करना चाहिए? फेलियर्स को करना चाहिए। फेलियर्स अगर हम सेलिब्रेट करें तो हमें सक्सेस पे ज्यादा कंट्रोल होगा, राइट? सो वी शुड ऑल्सो डॉक्यूमेंट आवर फेलियर्स, आवर डाउनफॉल। ये इजी जर्नी नहीं है, किसी ने नहीं बोला था कि इजी जर्नी है, बट इसको हमें सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं करके हमें फेलियर। सो आई लास्ट मंथ मैंने एक होल सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखा था कि कोई भी जनरेटिव एआई सोल्यूशन को एंटरप्राइज लेवल में इंप्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस आता है। आई डिड अ 4 सीरीज ऑफ आर्टिकल विच वाज वेरी, सबने काफी अप्रिशिएट किया, क्योंकि सब बोलते हैं कि जनरेटिव एआई मैजिक है। इसको एक्चुअली जब आप इंप्लीमेंट करोगे, दिस इज नॉट इजी। You need to actually make your hands dirty, right? And actually solve these problems, right? So please do that as well.
Okay, cool. So today we're going to start the second module. Very interestingly, we finished the first module, which is the basics and the fundamentals. आज हम second module शुरू करेंगे. And let's see. Yeah. So second module में हम क्या क्या करने वाले हैं, राइट? फर्स्ट मॉड्यूल में हमने इकोसिस्टम, फिर जनरेटिव एआई इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी, लो कोड नो कोड, देन इंडस्ट्री में कैसे यूज हो रहा है, एथिकल यूज, ये सब हमने किया, राइट? नाउ मॉड्यूल 2 में मॉड्यूल 2 इज कॉल्ड कॉन्वर्जेशनल एआई एंड कंटेंट क्रिएशन. इन मॉड्यूल 2 हम देखेंगे कि कौन से जनरेटिव एआई टूल्स का क्या सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, हमें क्या सिलेक्शन करना चाहिए, हमें क्या सिलेक्शंस करना चाहिए, कंपनीज क्या सिलेक्शन कर रही हैं, राइट? व्हाट आर सम स्टैंडर्डाइज्ड कंटेंट टूल्स, राइट, इन दैट इज देयर अवेलेबल इन द मार्केट, हम लोग वो देखेंगे. फिर 11th वो 9th एंड 10th सेशन होगा, जो कि आज और कल है. फिर थर्सडे एंड फ्राइडे को वी विल टॉक अबाउट, आई एम सॉरी, वेडनेसडे एंड थर्सडे को वी विल टॉक अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स एंड एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेक्निक्स एंड पैटर्न. तो नेक्स्ट वीक वी विल टॉक अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कंप्लीटली. Then we will also talk about prompt engineering for different domains. हर डिफरेंट डोमेन के लिए कौन सा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज करते हैं वो. फिर हम बात करेंगे एडवांस प्रॉम्प्टिंग एंड एआई वर्कफ्लोज. फिर प्रॉम्प्टिंग को हेल्प करके हम लोग एआई का वर्कफ्लो कैसे बनाते हैं, राइट? उसको हम वी विल टॉक अबाउट. देन वी विल टॉक अबाउट लैंग चेन एंड रैग, राइट? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. लैंग चेन एंड रैग के बारे में बात करेंगे हम. And finally, we are going to talk about evaluating and refining generative AI output. Generative AI जब output निकाल, मतलब whatever it is producing, उसको what is the way to evaluate whether that is okay or not, and refining it, right? And towards the end of the session of the module 2, which is the 17th session, we will be giving you a introduction to the capstone project, right? Capstone project का briefing होगा, एक छोटा सा session होगा where we will talk about the capstone project, right? So थोड़ा सा जो कोर्स का स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो प्रोजेक्ट ब्लॉक 1 है, प्रोजेक्ट ब्लॉक 1 you have time till the end of module 2 to submit. But again, please don't wait till the last moment. You can submit the project 1 block submission towards the end of uh, module 2. And then we will move on to module 3, which is on AI for visual content creation. There we will talk specifically about visual content creation. So the module 2 is about conversational AI and text content creation. Okay, okay, good. So let's get started. Is my screen visible? Session objectives ये हैं कि हम platform specific prompt strategies across major generative AI tools देखेंगे. What is the prompt strategies across major generative tools? We will also compare differences between GPT, Claude, and Gemini. And we will develop a strategic framework for the platform selection. Plus, we will create optimized prompt templates for recurring tasks. Okay. So this is the first thing that we will do. These are like everything that we will do, obviously. Okay. Throughout the session, we will have one activity जिसको हम थोड़ा करके build up करेंगे. एक ही activity होगा, उसका we have broken down the activity into multiple tasks, and we will do those activities. And by the end of the session, we should have a strategic platform selection framework for your specific role and a prompt template library, at least how to create a prompt template library, which is optimized for each platform. So this is what the whole, I hope we will cover all of this. Okay. So generative AI platforms के key milestones ये थे. So before 2018, there was something called a transformer architecture. Transformer architecture
is basically एक paper था, which is the paper's name was All You Need Is Attention, right? This is a paper which was written by, let me just say, yeah, it was, and it was written by one of Google's people. It is called Attention is All You Need, and it was written by this guy called, I think, what was his name? Vaswani. He was an Indian guy, plus a lot of other things, plus a lot of other partners he had, which basically said कि उसके पहले क्या था ना, तो थोड़ा सा टेक्निकल पेपर था वो, but let me try to explain that. There's something called transformers. Okay. Can you see the screen? It's called Attention is All You Need. Yes. Yes. Okay. So this was written by Ashish Vaswani plus his associates. Okay. तो ये एक रेवोल्यूशनरी पेपर था जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में था, कि एक मशीन लर्न कैसे कर रहा है, कैसे करता है, राइट? इसके ऊपर था। तो पहले जो पद्धति था, मतलब द वे दैट मशीन यूज टू लर्न, इसकी एक सेंटेंस हम बनाए, वो सेंटेंस का जो डिफरेंट वर्ड्स रहता है, एक के बाद एक वर्ड का रिलेशनशिप मशीन समझता था, राइट? तो सपोज द कैट सैट ऑन मैट, द और कैट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैट एंड सैट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, सैट एंड ऑन के बीच में क्या रिलेशन, ऑन एंड मैट, और ये सीक्वेंशियली होता था, राइट? तो व्हाट वासवानी's पेपर काइंड ऑफ brought into the front कि there is also a way कि we can do parallel learning, कि कैट जो है वर्ड, वो कैट सैट ऑन एंड मैट सबका रिलेशनशिप एक साथ उसको समझ में आएगा, राइट? सो इट्स अ पैरेलल रिलेशनशिप। सो कैट का जो रिलेशनशिप है विद द, सैट, ऑन एंड मैट, एक सो एवरी, सो दिस इज लाइक ईच वर्ड अटेंड्स टू द अदर वर्ड, क्रिएटिंग रिच कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो इससे क्या होता था कि लर्निंग बहुत ज्यादा डीप हो गई, राइट? पहले सीक्वेंशियल था, अब ये पैरेलल हो गया, तो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग डीप हो गया, पैरेलल प्रोसेसिंग हो गया, और द और मैट का जो रिलेशनशिप है, जो कि पहले किसी को नहीं पता था, सो डिपेंडिंग, मतलब डिस्टेंस वाज नॉट अ क्राइटेरिया, जितना भी दूर होता एक वर्ड, बट वी कुड ऑलवेज गेट द रिलेशनशिप। सो दिस वाज वेरी वेरी रेवोल्यूशनरी, कि लॉन्ग डिस्टेंस डिपेंडेंसीज भी it was easy to get that done, right? And it was faster to do. So previous models जो RNN models होते थे, उसमें sequential processing होता था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, लॉन्ग रेंज रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स नहीं होता था। ये हम टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग, राइट? स्लो ट्रेनिंग होता था और लिमिटेड स्केलेबिलिटी होता था। अभी पैरेलल प्रोसेसिंग होता था, देन कैप्चर्स रिलेशनशिप रिगार्डलेस ऑफ डिस्टेंस, फास्टर ट्रेनिंग एंड ज्यादा स्केलिंग होता था। तो ट्रांसफॉर्मर का ये आर्किटेक्चर था जो कि बहुत ही रेवोल्यूशनरी था, राइट? सो आफ्टर द 2017 पेपर, 2018 में गूगल ने ये सब मॉडल्स लॉन्च किए। गूगल ने बॉट लॉन्च किया, जीपीटी, ओपन एआई ने GPT-1 लॉन्च किया, राइट? एंड बाय 2022 ओपन एआई launched GPT-3. That was when it was made public. Okay, so that is what happened. And 22 में GPT then, so what happened कि तब तक ये किसी को पता नहीं था, मेन स्ट्रीम में it was not literally released because OpenAI released GPT-3. That is how transformer technology became closer to the mainstream. We started using it. General public started using it. Right now, GPT-4, Claude, Gemini, and other advanced model continue building on nothing but this transformer foundation. Okay? So this is the whole transformer technology. Again, it was very, very proud to be an Indian that way. Mr. Ashish Vaswani. Okay. So we all can talk about that. Okay. Another one I wanted to show you is this. Is my screen visible?
Yes. So how self-attention works, ये हमने देखा। तो अभी ट्रांसफॉर्मर को ट्रेन कैसे करते हैं, राइट? बोलते हैं ना कि एलएलएम को ट्रेनिंग कर रहे हैं हम लोग, राइट? उसके पीछे एक थोड़ा सा टेक्नो आई डिड नॉट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन द टेक्नोलॉजी, जस्ट वेरी। तो द ट्रेनिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, इसमें 3 स्टेप होता है आपको। दिस इज ऑल आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू नो। वन इज प्री ट्रेनिंग, द अदर इज फाइन ट्रेनिंग, एंड द थर्ड इज अलाइनमेंट, right? So pre-training is basically when you train massive text using self-supervised learning, जो मैंने आपको लाइब्रेरी का एग्जांपल दिया था, right? मैसिव टेक्स्ट है आपके पास, उसमें एक मशीन को हम प्री ट्रेन करते हैं, राइट? देन उसको हम टास्क स्पेसिफिक फाइन ट्यूनिंग करते हैं, राइट? कि वी अडेप्ट दिस मॉडल टू स्पेसिफिक टास्क, कि like for example, in Claude you have more logical tasks, in GPT you have image wala task, you have video creation task, you have data analytics task. What are some specific tasks पे हम उसको fine tune करते हैं? So fine tune for sentiment analysis with labeled reviews, for example, इसमें लिखा हुआ है, right? And finally we get, so you must have heard कि a lot of humans are used to give feedback to to the LLMs. As this is there is a job role where a human is used to look at a lot of output and give feedback, ये ठीक ठाक कर रहा है कि नहीं. तो that is a process जो कि सब कोई करता है, where we the reinforced learning by human feedback. कोई भी output अगर LLM से निकाल रहे हैं, वो हमें और भी ज्यादा फाइन ट्यून करते हैं through human feedback. Right? Example, humans rate different learn model responses and model then learns preferences. Right? So this is how a transformer का training ऐसे होता है, right? And fine tuning भी ऐसे ही होता है. So this is the whole training वाला explanation. Today, who are the major players? These are the 3 major players that we have. The most biggest player, the players with the सबसे ज्यादा reach है इन तीनों का, चैट जीपीटी, क्लॉड और जेमिनाई. इन तीनों का सबसे ज्यादा reach है. Everybody agrees, right? Of course, there is Grok and DeepSeek, but they still they will take a little time to catch up. But these 3 are the most popular and the biggest players in this market, right? तो हम आज इसके बारे में ही बात करेंगे. Everybody knows about GPT. GPT 3.5 is free, and from 4 it is paid. You have 1600 plus your tax comes to more than that for a plus model and model subscription. But with the plus model subscription, you also get access to Sora and code and everything. इसमें कोड इंटरप्रेटर है, प्लगइन्स है, कस्टम जीपीटीज हम बना सकते हैं. ये बहुत ही वर्सेटाइल टूल है, ठीक है? हमने काफी जीपीटी, क्लॉड एंड जेमिनाई यूज किया है. सो एवरीबडी नोज, आई होप सबके पास अकाउंट्स हैं ये तीनों प्लेटफॉर्म में. एवरीबडी हैज एन अकाउंट फॉर एटलीस्ट दीज 3 प्लेटफॉर्म्स. Claude में 2.1 is I think is the I think it is 3.7, but you have the free version and you have the paid version. Free tier is there, but with a little limitations. But again, I think Claude में भी काफी आप use कर सकते हो. And you have 100K plus token window context. So what is token window? So each क्वेरी को आंसर करने के लिए the system uses something called a unit called token. तो आप जितना टोकन यूज करते हो उतना एक्सपेंसिव होता है. ईच टोकन का एक कॉस्ट होता है. तो पहले कुछ टोकन को दीज कंपनीज गिव इट एज फ्री. उसके बाद जब आप टोकन यूज करोगे, यू हैव टू पे फॉर इट, राइट? सो दैट इज वन. एंड द अदर थिंग इज दैट कि हर प्लेटफॉर्म का, इधर वो जीपीटी है, क्लॉड है, जेमिनाई है, एनी अदर, जो एक सेशन होता है
आपने चैट कर, यू स्टार्टेड टू चैट, राइट, एंड यू कीप ऑन चैटिंग एक सेशन में। तो अगर सेशन बहुत लंबा हो गया, मतलब आपने काफी टोकन यूज कर लिया, राइट, एंड टुवर्ड्स द एंड जो रिस्पॉन्स है वो मतलब क्वालिटी खराब होने की शुरू करता है, लैग करना शुरू करता है, क्योंकि आपने टोकन विंडो का जो लिमिट है वो आप उस लिमिट के पास आ रहे हो, राइट। सो यू हैव टू बी, सो सबसे ज्यादा टोकन विंडो किस प्लेटफॉर्म का है? एनीबडी नोज? एनीबडी नोज विच प्लेटफॉर्म हैज द लार्जेस्ट टोकन विंडो? नो। Gemini, that is true. Gemini has the largest token window. And what is the token size for Gemini? What is the token window for Gemini? Anybody? It's 1 million. Let me just be. Mm. 1 million. Yes, correct. Varun has it. It is 1 million token window, which is the largest in the market. That means आप अच्छा, टोकन विंडो जब कोई भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो या कोई भी इमेज अपलोड कर रहे हो, वो जो रीड कर रहा है और उससे जो इंसाइट निकाल रहा है, उसमें भी टोकन खर्चा होता है, राइट। सो दैट्स व्हाई, बिकॉज जेमिनाई हैज सच अ लार्ज टोकन विंडो, राइट। आप बहुत सारा डॉक्यूमेंट इसीलिए आप जेमिनाई में आप अपलोड कर सकते हो, यू कैन बेसिकली यूज दैट, ओके। So that is the good thing. So here in Claude, there is 100,000 plus token window, but in Gemini, there is absolutely more than that. Okay. Today I wrote a little post on LinkedIn about Gemini Live. किसने Gemini Live try किया है? Gemini Live. It is very interesting. Please, if you can, go and have a look at my post. Gemini Live is something that you can put it on your phone. You download Gemini, and Gemini Live will also come depending upon आपका कौन सा subscription है, and then you can talk to Gemini. Okay, कि this is what is good about Gemini Live is that you can screen share. You can screen share with Gemini, and it is going to tell you its observations. राइट। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो या आप यू हैव अ रिपोर्ट व्हिच इज देयर ऑन योर फोन, राइट, तो यू कैन स्क्रीन शेयर and you can say what do you have to say about this, right, and then it will give its response. So that's a very cool thing, and audio में response देता है. It's very very seamless. बहुत अच्छा audio quality है, and it gave a fantastic outcome for me. So you should also try Gemini Live. Okay. Audio और vision, अभी तो हम टेक्स्ट जनरली ज्यादा यूज करते हैं, बट यू शुड ऑल्सो यूज ऑडियो एंड विजन, कि जीपीटी को आप पिक्चर दिखाओ एंड देन बात करो, राइट, बिकॉज दैट इज ऑल्सो द फ्यूचर ट्रेंड. The text one will go after a certain point of time. People will start using more and more, and applications will have more and more audio and vision. It's called audio and vision. Okay. Sakshi used it today. Great. And I so most of these things are basic features, right? Even if it is probably paid today, tomorrow it will not be paid. Because a lot of बहुत research हो रहा है इन पे, and especially companies like Google and all are making them free for everybody, right?
लाइक फॉर एग्जाम्पल क्लॉड में आर्टिफैक्ट वाला जो फीचर है वो इट इज फ्री फॉर एवरीबडी, इट्स इन द फ्री टियर, so it's a good thing to try. Okay. Uh, yeah, I have given a kind of a comparison matrix between ChatGPT, Claude, and Gemini, right? Context length um, is hang on. Context length, creative writing, factual accuracy, code generation, document analysis, and cost effectiveness. Okay. इधर कॉन्टेक्स्ट लेंथ सबसे ज्यादा क्लॉड का बताया गया है, बट आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू. दिस माइट बी अ फैक्चुअल मिस्टेक, सो लेट मी गेट दैट करेक्टेड. द मोस्ट कॉन्टेक्स्ट लेंथ इज बेसिकली जो टोकन साइज है वो है, तो ये जेमिनाई का है, इट्स नॉट फॉर क्लॉड. So I will get this changed. For creative writing, GPT is there, right? GPT, then Claude, then Gemini. For factual accuracy, first is Gemini, then Claude and GPT are together. For code generation, GPT is the first one, then Gemini, and then Claude. For document analysis, it's Claude first, and then Gemini, and then GPT. And cost effectiveness, most cost effective is Gemini, because in free tier में बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, right? So that is something that you can use. I will get the first one corrected. And I also think code wala be something that we will have to look into. But anyway. PB, I don't know what your name is. You spoke about data security. आपने chat में लिखा कि data security in the free version is factual analysis. Sunil, is about data analysis. It's more, it's about data analysis. It's about research. ये सब है. ठीक है. Hi Priyanka. Priyanka, yes, हमने बहुत डिस्कस किया है about data security and free version and enterprise version and ethics and all of that last module में we have discussed it a lot. Okay. There is a way to kind of give. So it is always advisable कि you should not upload sensitive information in the free tiers. Should not do that. Right? Okay. So what are the platform strengths? Let us just get that done. ChatGPT excels in creative content generation. We know this, right? Code generation, debugging, detailed instruction following, marketing copy and campaigns. GPT can do all of that. Anything else? Anything else? Did I miss out on anything? Anything else about ChatGPT in terms of ability? Okay. Claude excels in long document analysis, in reasoning. This is a very, very important thing about Claude कि वो बहुत अच्छा reason, logic वगैरह कर सकता है. So long document analysis, nuanced reasoning, complex content organization वगैरह, right? And ethical consideration. So the Claude was made to be one notch above GPT. That's why Claude is slightly more expensive also, a little more expensive also, right? Gemini excels at factual information retrieval because it is powered by Google. Google is again like the largest library of the world and it has access to everything. Therefore, iska data ka jo accuracy hai, data accuracy capability is the most in Gemini. Gemini में वो सबसे ज्यादा है, right? Real time data integration अच्छा से कर सकता है. गूगल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास अगर गूगल का अकाउंट है, गूगल ड्राइव,
गूगल स्लाइड्स, गूगल शीट, पूरा गूगल का जो इकोसिस्टम है इसके साथ वो इंटीग्रेट कर सकता है। जैसे को पायलट माइक्रोसॉफ्ट के सारे इकोसिस्टम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होता है? इससे क्या फायदा होता है? What is the benefit for, say, like a Google or a Microsoft to have a direct document and email read and response? Yes, yes. So आपको हमेशा आपका context देना नहीं पड़ेगा. So in GPT does not have connection with anything. Right now, I think it can connect to your Google Drive. लेकिन every time you don't have to give it your context. आपका context हमेशा देना नहीं पड़ेगा. आपका document अगर SharePoint में है या Google Drive में है, आप immediately उससे connect करके आप बातचीत कर सकते हो. That is very, 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 very useful. Okay, so that's why माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल का बहुत बड़ा एडवांटेज है ये, जो कि अगेन ओपन एआई का नहीं है। मल्टीलिंगुअल कंटेंट इज जीपीटी इज आल्सो वेरी गुड इन मल्टीलिंगुअल कंटेंट एंड जेमिनी आल्सो इज वेरी गुड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इसके पास गूगल का जो स्ट्रेंथ है वो है इसके पास। ओके So we will now create a strategic selection framework. पहले आपको अपने टास्क का रिक्वायरमेंट देखना है, राइट? कि आपका टास्क क्रिएटिविटी या फैक्चुअल है, उसमें क्रिएटिविटी ज्यादा है या फैक्चुअल ज्यादा है, उसका लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, उसमें रीजनिंग कितना चाहिए, और एनी अदर स्पेशल कैपेबिलिटी अगर चाहिए, देन यू कैन बेसिकली असेस द टास्क रिक्वायरमेंट, और उससे यू कैन फिगर आउट कि कौन सा टूल will match each job. Okay. And one more important thing is that don't hesitate to switch platforms. Don't hesitate to also use multiple platforms, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म से बढ़िया है अगर आप दो तीन प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं. इट्स द सिमिलर थिंग, राइट? कि अगर एक व्यू पॉइंट है वर्सेस आपके पास 5 व्यू पॉइंट है, यू आर ऑलवेज मोर रिचर. So do not restrict yourself to one platform. You should actually use and switch very, very frequently between platforms. That is very, very critical. I have a question. Don't we consider researching part of this group? Yes. So what I have given right now are nothing but examples. Okay. So you can also have research as part of this. तो research फिर किस में करेंगे? So that कितना complexity है research में? So what are the different things that different platform you should use? So research can also be part of this. So what I've given are basically examples. ठीक है? So that is one thing that you need to do. Okay. Um, a moment. कंपनियां एक्चुअली क्या अप्रोचेस यूज करती हैं टू सिलेक्ट LLMs और मॉडल्स टू यूज इन देयर कंपनी, राइट? तो देर आर सर्टेन इम्प्लीमेंटेशन अप्रोचेस, राइट, दैट कंपनीज यूज. कंपनीज लाइक TCS, इन्फोसिस, डिजिटल एजेंसी, कंटेंट स्टूडियोज, ये सब क्या यूज करती हैं? सबसे पहले इज द स्टैंडर्डाइज प्रॉम्प्ट और द टेम्पलेट ड्रिवन अप्रोच. ओके. What is the template driven approach? The template driven approach is basically favored by large enterprises like TCS and Infosys. Okay. They create standardized prompts which are optimized for each platform to ensure consistency and quality control. Okay. So for example, एक ही prompt है, standardized prompts,
और उसी प्रॉम्प्ट को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि स्टैंडर्डाइजेशन होता है, आउटपुट में स्टैंडर्डाइजेशन होता है, राइट? सो दिस इज टेम्पलेट ड्रिवन अप्रोच इज यूज्ड बाय, क्यों क्यों करते हैं ऐसा? Anybody and can tell me why is large companies standardized prompt approach क्यों करते हैं? Yes, I think Sachin got it right. For to keep maintaining standards. Now, these companies deal with a lot of data, so they cannot have too much of experimentation in their prompting. So they use standard prompt templates and use it across for accuracy, for standardization. Yes. Okay. Somebody also asked me, is Perplexity compared with GPT, Claude, and Gemini? No. So Perplexity is not a general purpose tool. Why is Perplexity not a general purpose tool? Anybody? Perplexity is not a general purpose tool. Perplexity is not an LLM. Perplexity uses LLMs, but Perplexity is not yes. Perplexity is a specialized tool used for research. That is why it was built. It uses different LLM capabilities. Okay. Its models are built on different LLMs, but it does not have its own. Okay? Understood? Did I answer your question? That's a good question, though. Okay. So the first is template-driven approach. Second is the adaptive selection approach, which is popular amongst digital agency and content studios. So थोड़ा सा creativity जहाँ ज्यादा है, right? थोड़ा सा experimentation करने का scope जहाँ ज्यादा है, right? इधर क्या होता है कि you can switch heuristics based on task requirement, right? So the whole idea is that the platform basis the task requirement, आपका task कैसा है, basis that you can switch the platform, right? कभी आप एक टूल यूज करते हो, कभी आप दूसरा टूल यूज करते हो, उसमें आप प्रॉम्प्ट भी चेंज कर सकते हो। तो अडेप्टिव सिलेक्शन, सो डिपेंडिंग अपॉन आपका टास्क कैसा है वैसा आप टूल को अडेप्ट करते हो। दैट इज द सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच। ओके, the third is the parallel processing approach, where multiple platforms with multiple output is compared and then the best one is taken. इधर ये फाइनेंशियल सर्विसेज एंड लीगल फर्म्स में होता है। क्यों? क्योंकि उसमें you have to take the best because there is no scope for error. Financial services में there is no scope for error. Numbers है भाई. So you need more choices of output even in legal firms. And then you choose the best. So that is the approach companies take. Is that clear? And finally, you have the specialization approach. Now, the specialization approach is preferred by e-commerce and marketing organizations. इसमें क्या होता है कि you dedicate specific platform to particular content types or functions. Right? So specialization approach, like you have एक specific function है, उस specific function के लिए ये ही specific platform use होता है. See, there is a difference between platform and tools. एक टूल में डिफरेंट LLMs यूज होता है. हियर यू कैन प्लेटफॉर्म और LLM को आप यू कैन यूज सिनोनिमसली. ठीक है, तो डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर डेडिकेटेड फंक्शंस स्पेशलाइजेशन अप्रोच होता है. ये ई कॉमर्स या मार्केटिंग टीम्स में यूज होता है. Sachin is asking, so most of the time we will be using Claude, Gemini or GPT. So I think we discussed this. पहले भी हमने डिस्कस किया था कि आपको अपने डिपेंडिंग ऑन आपका जो रिक्वायरमेंट है उसमें से you have to break it down into 3 layers. पहला is a general purpose tool.
एक फर्स्ट लेयर इज जनरल पर्पस टूल। जनरल पर्पस टूल में क्लॉड जेमिनी, क्लॉड जीपीटी यूज होता है, राइट। सेकंड इज अ स्पेशलाइज्ड टूल। तो उस आपके टास्क में कौन से स्पेशलाइज्ड टूल्स लगेंगे? इफ यू आर अ रिसर्च पर्सन यू शुड हैव परप्लेक्सिटी, इफ यू आर अ वीडियो पर्सन यू शुड हैव रनवे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड फाइनली इंटीग्रेशन, जब जहां डिफरेंट टूल के आउटपुट्स को यू कैन कंबाइन एंड देन क्रिएट अ रिजल्ट, राइट। सो दैट इज द इंटीग्रेशन। सो यू शुड आइडियली हैव ऑल 3 लेयर्स ऑफ टूल्स। ये हमने पहले भी बात किया था। फर्स्ट एंड थर्ड में डिफरेंस है कि यहाँ आप प्लेटफॉर्म स्विच कर सकते हो और यहाँ आप प्लेटफॉर्म नहीं स्विच कर सकते हो। एक टास्क के लिए इन द फर्स्ट वन यू कैन स्विच प्लेटफॉर्म्स, बट इन द थर्ड वन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क यू हैव अ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। दैट इज द डिफरेंस। Okay, so now let's do a quick activity. This is a prompt, एक prompt template है, और ये सेम prompt आप तीनों में यूज करके कंपेयर कीजिए। I have put that in the chat. Use the same prompt. Use the same prompt in GPT, Claude, and Gemini, and see the difference and tell me what your observation is. इसी prompt को अब यहाँ लिखा हुआ है इम्पैक्ट ऑन जनरल ऑन योर इंडस्ट्री। ऑन इंडस्ट्री में आप अपना इंडस्ट्री के बारे में प्लीज लिखे, किस चीज में आप काम कर रहे हो या काम करना चाहते हो। एंड जीपीटी, क्लॉड एंड जेमिनाई तीनों में आप इसी प्रॉम्प्ट को लिखिए, और जो आउटपुट आ रहा है उसको कंपेयर करके अपना ऑब्जर्वेशंस मुझे बताइए। आप माइक को अनम्यूट करके भी बता सकते हो, आप चैट करके भी बता सकते हो। Can I have more people switch on their cameras, please? Everybody, please switch on your camera. Everybody, please switch on your camera. I want to hear somebody's observation. Somebody tells me their observation will be good. Same prompt, 3 platforms. Look at the output. क्या difference है? I can help you a little more. इस टेबल के जरिए आप कंपेयर कर सकते हो कि जीपीटी में, क्लॉड में या जेमिनी में आउटपुट
इन सब पैरामीटर में आप कितना स्कोर करोगे ऑन 5? इंडस्ट्री से रेलेवेंस, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आउटपुट, फैक्चुअल कंटेंट, फैक्चुअल एक्यूरेसी, नुआंसेस और ओवरऑल क्वालिटी. Okay. Yes, yes, it's different. It's different. Somebody, can somebody volunteer to explain the difference? कोई volunteer करेगा बताने? बोलिए सचित. Sanchit. Hello, am I audible? Yes. So I have figured out the difference that GPT is quite in summarized form. That I am from the payroll background and I have pointed out my industry. So it given me in some summarized form, whereas cloud given me more factual, data-driven answer. And Okay. for the Gemini, it is more in research form. It has more in elaborative manner compared to Okay. both two. Yes. Okay. Okay. Very, very valuable. Yes, absolutely. I also feel the same. Anybody else has any other observation? Comparison between like same prompt in GPT, Claude and Gemini? Sachinandan, Manoj, Akshay, आपका क्या observation है? Dia has the same observation. Anybody else wants to go? Does somebody think that ChatGPT gives too much of information not needed? While Claude, yeah, this is done by Claude. ChatGPT provides an easy to understand form. Okay, so everybody agrees to what Sanchit has said? Everybody? Okay, cool. So absolutely, मतलब I also understand this is you have to constantly आपको play करते रहना है to understand कि क्या. तो आप समझेंगे in the next few slides मैं बताऊंगी कि GPT, Claude and Gemini से बातचीत करने का भी actually ढंग अलग है. आप GPT को जैसा prompt दोगे, GPT has a particular way of, अभी हम थोड़े detail में जा रहे हैं, मतलब there is prompt engineering and this is the starting of that, right? So we will understand that there is a certain way that we should ask information from GPT क्योंकि उसका ये specific characteristic है and Claude का एक specific way है, right? So now the answer to this is actually what Sachit had says. Sachit जो भी बोला है ना उसी में answer है.
So how do you think we should prompt GPT? How do you think we should prompt Claude? And how do you think we should prompt Gemini? Anybody? आप बोल भी सकते हो. मैम जीपीटी को तो पूरा ही बताना पड़ेगा सही तरीके से एक्सप्लेन कर कर. जीपीटी को पूरा बताना पड़ेगा. हाँ, क्योंकि अभी जो मैंने जिम के लिए किया था, फिटनेस इंडस्ट्री के लिए, तो उसमें ये हाँ. हुआ कि जो क्लॉड है ना, उसने ज़्यादा हाँ. फैक्चुअल आंसर दिया. हम्म. उसने इसमें चैलेंजेस क्या-क्या आएँगे और आप कैसे एआई को यूज़ कर सकते हो, इस चीज़ को बताया, लेकिन जो चैट जीपीटी है ना, उसने नहीं बताया. और जेमिनी ने कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन करके बताया, लेकिन ये भी उसी से मिला-जुला हुआ था, क्लॉड से. अच्छा, तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है लोग क्लॉड और जेमिनी में शिफ्ट कर रहे हैं जीपीटी से. जीपीटी को आप जीपीटी को भी हमें, जैसे जीपीटी पॉइंट बाय पॉइंट आंसर देता है, वैसे भी हमें भी उसको पॉइंट बाय पॉइंट इंस्ट्रक्शन देना है कि हमें एक्चुअली क्या चाहिए. राइट. तो वो स्टेप बाय स्टेप करने में उसको वो हेल्प होता है. राइट. सो वी विल लर्न अबाउट दैट नाउ. ओके. तो सबसे पहले लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का 7 इफेक्टिव पिलर्स क्या है. राइट. So these are the 7 things that you need to know before you start learning prompt engineering. Okay. पहला is clarity. आपका prompt में clarity होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या. What is the requirement that you have? Precise, इधर उधर मतलब without any unambiguous. Unambiguous मतलब कोई unnecessary जो details है या कोई unclear जो details है वो हमें नहीं चाहिए. Precise instructions चाहिए. Okay, that is one. सेकेंड इज स्पेसिफिक चाहिए. हमें जेनेरिक नहीं चाहिए. जेनेरिक इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, हमें स्पेसिफिक चाहिए. राइट. तो what I would advise is कि before you start prompt engineering and writing prompts, आप पहले you pick up a notebook or a note and make sure कि ये जो prompt है उसमें ये सब चीज है. अगर नहीं है तो उसको और थोड़ा सा रिसर्च करके आप डालो. तो स्पेसिफिसिटी चाहिए. जेनेरिक इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए. कि आई एम अ कंटेंट राइटर इज नॉट, is very very generic. Okay. I am a content writer with 20 years of experience, 10 years of which was in media and 10 years of which was in ed tech, like that. Specific instruction चाहिए which the GPT can use. Third is context चाहिए. This is something that हमने बात किया था. Right. Context is something जो कि GPT को नहीं पता. Right. जीपीटी को, या मैं जीपीटी बोल रही हूँ, जीपीटी मीनिंग जनरेटिव एआई है. राइट. सो कॉन्टेक्स्ट इज समथिंग दैट जो कि जनरेटिव एआई को नहीं पता, जो कि हमें पता है. अगर हमारे कोई डेटा है या हमारा कोई रिपोर्ट है जो कि उसके पास नहीं है, या अगर है भी तो उसको वो सिलेक्ट करने में या उसको मैप करने में बहुत टाइम लगेगा. राइट. तो हम वो कॉन्टेक्स्ट देंगे उसको. राइट. जो कि उसको नहीं पता. राइट. फॉर्मेट, ये भी हमने बात किया है कि डिजायर्ड आउटपुट स्ट्रक्चर हमें किस फॉर्म में चाहिए वो हमें मेंशन करना है. टोन, टोन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फॉर्मेट की स्टाइल, वॉइस, सैंपल देना है हमें, समटाइम्स एग्जाम्पल देना है. अगर हमें खुद टोन हमें नहीं पता है तो हमें एग्जाम्पल और सैंपल देना है. कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट मतलब जो हमें नहीं करना है. राइट. नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग, बेसिकली जो हमें नहीं करना है वो भी हमें डालना है कि आप ये तो करो बट मेक श्योर कि आप ये चीज नहीं करो. उससे और ज्यादा क्लैरिटी आती है. राइट. एंड फाइनली इज आइटरेशन. आइटरेशन इज दैट एक बार प्रॉम्प्ट लिख के हमें स्टॉप नहीं करना है, आउटपुट पे हमें फीडबैक देते रहना है. ये सब चीज इज द 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग. ओके. एनी क्वेश्चंस हियर? Bandhavya is saying Claude and Gemini are giving reference links, unlike GPT. So in GPT, if you want reference link, Bandhavya, you can also get that. You can ask for it, or you can wait. Do I have my GPT on?
Wow. Yeah, so Bandhavya, can you see my screen, my GPT screen? Yes. So here in tools, if you click search the web, right? ये वाला जब आप option click करोगे, then it will, and you also have to say, give me references, then it will also give you references. Okay? Yeah, so these are basically the seven pillars of effective prompting. Now let us go कि चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट करने के लिए हमें क्या स्पेशल टेक्निक यूज करना है, राइट? सो की टेक्निक इज दैट उसको स्ट्रक्चर पसंद है, चैट जीपीटी को स्ट्रक्चर पसंद है, क्योंकि इसलिए वो स्ट्रक्चर जैसा आंसर भी देता है, राइट? तो स्ट्रक्चर विद नंबर लिस्ट फॉर स्टेप्स अगर आप दोगे तो वो ज्यादा उसको अच्छा से समझेगा, राइट? स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट, राइट, ये आपको देना है, ठीक है? अगर आप कोडिंग करोगे तो आपको कोड ब्लॉक फॉर स्ट्रक्चर डेटा भी आप दे सकते हो, राइट? एंड यूज सिस्टम मैसेज फॉर पर्सोना और बिहेवियर, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल ऐसा, you are a financial analyst specializing in Indian market. Analyze the following quarterly report data in these specific steps. मैंने steps दिया, पहले आपको की मेट्रिक समरी चाहिए, फिर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन चाहिए, फिर मार्केट कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस चाहिए, फिर फ्यूचर आउटलुक चाहिए. And format your response with clear header for each section and include a summary table of metrics. So this is very, very specific prompt, right? When you give this, this is the kind of prompt a chat GPT will really work well with. Okay. So do you want to try that? आपका जो पहला prompt है, कहाँ गया? ये वाला prompt, right? You want to change this into a structured prompt? Let's just try. So this is like a sentence wala prompt. Generative AI on. I'm going to write. संचित आपका कौन सा था? इंडस्ट्री पेरोल. Yes, Peru. Give an impact of generative AI on payroll in India with 3 opportunities and 2 challenges. अब इसमें what are the headings you would want? आप अभी क्लॉड के उसमें जाइए, क्या क्या हेडिंग्स आपको अच्छे लगे? हम ये दे देते हैं. लेट्स सी. Let's just take this. Sorry, where is my? प्रॉम्प्ट को थोड़ा चेंज किया हमने. तो हमने यहाँ एग्जीक्यूटिव समरी नहीं लिखा. अगर हम इसको एग्जीक्यूटिव समरी लिखें,
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। देखिए यहाँ इट इज गिविंग द रेफरेंस ऑल्सो, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन। तो अभी मैंने तो ये डाल दिया, आप यू कैन पुट इन एनी हेडर दैट यू वांट, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। दिस इज अ बेटर वन। यस, सो दिस इज हाउ जीपीटी वर्क्स। अगर आपको कभी लगता है कि जीपीटी ने ठीक रिजल्ट नहीं दिया, उसको भी इंप्रूव कर सकते हैं, उसको स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट्स चाहिए। ओके, now how does Claude work? Claude works completely differently. Claude is more of a conversational, that's why, and the prompt जो मैंने आपको दिया था वो conversational prompt है, right? इसीलिए Claude का अच्छा रिजल्ट आया। it is encouraged, so it encourages step by step thinking and the frame, so it is more conversational. So here if you look at this prompt, this is a very conversational prompt. Okay, it would be help and logical as well, right? तो इसीलिए Claude का वो वाला prompt, that is a better one. So that is a Claude way of prompting. Missing out anything? Yeah. So Claude responds best to conversational, detailed, contextual prompts that guides its reasoning process. उसका reasoning process काफी strong है, इसीलिए उसको conversational और deep contextual prompts उस पे काम करता है, right? And it provides comprehensive context about your goals and background information, right? और Claude also handles larger prompts. कभी कभी क्या होता है ना, जीपीटी को आप बहुत ज्यादा लंबा अगर प्रॉम्प्ट, लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट देते हो ना, तो वो डगमगा जाता है। Claude can handle larger prompts as well. उसका ये capability अच्छा है, ठीक है? And explicitly it encourages step by step thinking by asking it to think carefully और reason through. अगर आप ये चीज आप Claude को बोले कि think carefully, reason through, और अच्छा होगा। Okay, so this is the good thing about Claude. तो यहाँ भी लिखा हुआ है, देखिए कि please think through this carefully. This is a very useful phrase to give Claude. Claude को जब भी prompt करोगे, ये वाला चीज आप जरूर दीजिएगा। Please think through carefully और please reason through carefully. इसमें बहुत अच्छा से वो respond करेंगे। Right? These are some keywords. And Gemini का is direct, concise prompt. ठीक है, ये and आपने भी देखा कि Gemini बहुत ज्यादा लिखता है, तो Gemini को जो भी ज्यादा लिखता है उसको आप छोटा करने के लिए exactly बताइए कि क्या करना है। So direct, concise prompt, leverage bullet points में आप prompts डालो, single clear question, right? ताकि वो ज्यादा information आपको नहीं दे। तो summarize the latest RBI policy changes affecting small businesses in India. अगर आप खाली बोलो summarize the latest RBI policy changes, बहुत लंबा चौड़ा दे देगा, but you are making it specific, affecting small businesses in India. So it is going to be concise, okay? And of course आपने headings भी दे दिया है, right? Understood? So because different platforms respond differently to the same prompt, you should change your prompts for different platforms. Okay? Because the same prompts may or may not work. Any questions here? कोई question है अभी तक? Any questions? No question. ठीक है. I want you to appreciate this because this is the basic of prompt engineering. अभी हम लोग जब prompt engineering शुरू करेंगे,
These things are very, very basic to that. Okay? एक बार समराइज कर दो कौन से काम के लिए क्या टूल बेस्ट रहेगा. सुहान तो बस इसी चीज के पीछे पड़े हैं. कौन से काम के लिए कौन सा टूल बेस्ट रहेगा. Wait, let me give you the list. The list. That is what you're looking for. Can you see this list? Can you see this list? Yes. This is my recommendation. These are the tools I have used and I have found a lot of benefit, and these are the tools that we will be talking about. Okay. With this, let's take a short break. We will come back at 9, sharp at 9. Okay. Bye, everyone. Chandramohan ne 9:05 bataya tha, so I thought I'll give 3-4 minutes extra. Shrikant, it's a very, very good question. Shrikant's question is, can these tools self-evaluate their performances? Compare their performance with other AI platform. कुछ भी कर सकता है. GPT is not very, what can I say? It is not very, yeah. So it doesn't really value its own the output, more than anything else. वो भूल भी जाता है, right? So आप अगर उसके output को या किसी और के output के साथ compare करना चाहते हो और उसी को बोलो, और एक step और आप comparison का parameter अगर दे दो, तो वो बिल्कुल compare करेगा, कोई भी करेगा. So that is also possible. You can do that. Okay. I have a very interesting thing to share with you. कोई भी अगर आपको पूछे, can you see my screen? Can you see my screen? Yes. कोई भी अगर आपको पूछे कि आपका रिपोर्ट या पोस्ट या टेक्स्ट या मैसेज या ईमेल आपने एआई से लिखा है कि नहीं, so just wanted to start using this terminology. आप बोलो कि it is, yes, it is AI, but it is human plus AI used mindfully. इसमें मेरा thought process है. So FMAI, which is formed mindfully with AI. So you can always say that this is created with AI and me. Yeah. So I found this very interesting post on LinkedIn, and I found it very, very pertinent सबके लिए, because everybody talks to us like that, right? आपने AI use किया तो you this is one thing that you can say, that it is formed mindfully with AI. Okay. You will use it? Yes? Okay. Nice. Okay. We learned about optimizing prompt for different platforms. ChatGPT के लिए हमें कैसे prompt लिखना चाहिए, because it likes structure. आप अगर एक prompt ChatGPT को दो, तो वो जब outcome देगा वो बहुत structured bullet point format में होता है. इसलिए इसको prompt भी structured way में दो तो वो better respond करेगा. Similarly, Claude
gives a lot of logical contextual response. इसलिए उसको अगर prompt भी आप वैसे दो तो और better वो करेगा. उसको point wise bullet point वाला structured prompt से ज्यादा better वो react नहीं करेगा. It needs conversational contextual prompt जहाँ ज्यादा logic है. एंड जेमिनाई को आप एग्जैक्टली टारगेटेड छोटा छोटा चीज बोलो. आप जेनेरिक मत बोलो, स्पेसिफिक बोलो. जेनेरिक बोलने से बिकॉज उसके पास गूगल है, वो पूरा राम कहानी दे देगा, राइट? सो जेमिनाई को टारगेटेड बोलो कि आपको क्या चाहिए, एंड दैट इज हाउ यू शुड इंटरैक्ट विथ जेमिनाई. So this is called a task routing framework. So what is a task routing framework? Task routing framework बोल रहा है कि एक्चुअली ये not how. Let me write this down. ठीक से हम बना नहीं पाए हैं. Hang on. This is how it should be. Can you see my screen? Essentially मैं ये बोलना चाह रही थी कि अगर कोई हाई क्रिएटिविटी टास्क है तो उसको हम जीपीटी को देंगे. अगर लॉन्ग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है तो उसको हम क्लॉड को देंगे. और कोई फैक्चुअल रिसर्च करना है तो उसको हम जेमिनी में देंगे, राइट? सो can you give me some tasks? Let's discuss and please feel free to unmute yourself. Any other task? Let's see कि वो task कौन से इन तीनों में से किसमें better suit करेगा. Can you give us more tasks? Anything else? ये सब टास्क इन तीन कैटेगरी में हो जाता है. Yeah. So high creativity task like marketing copy. अच्छा किसी ने दिया है क्या? स्टॉक स्क्रीनिंग. स्टॉक स्क्रीनिंग के लिए कौन सा टूल हम यूज करेंगे? एनीबडी? व्हाट डू यू थिंक? यू साक्षी, स्टॉक स्क्रीनिंग क्या होता है? हाँ, सचिन बोल रहे परप्लेक्सिटी हैज अ फाइनेंस टैब. साक्षी, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज स्टॉक स्क्रीनिंग और उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्स्ट हमें देना पड़ता है? आप दोगे? साक्षी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ, तो स्टॉक स्क्रीनिंग अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया, आई गॉट दैट, बट you don't have a mic. It's okay. So anybody else, if you have understood, you can actually unmute and explain to me. Stock screening according to your criteria. Screening criteria, I got that. लेकिन data कहाँ से जाएगा? Where will you have the data from? Stock market का data कहाँ से जाएगा आपको? Because that keeps changing, right? Any idea? Google से जाएगा. Is it reliable? NSE website, News and Trading View. Which is the most reliable one? Wikipedia. NSE websites more reliable. Okay. So from the website, we can take the stock details and then screen according to what you do. So Sakshi, give me an example of your screening criteria.
Sakshi, give me an example from of your screening criteria. P ratio. Okay. Market cap. Okay. So now tell me which one will do your job better for you. Volume. Okay. Now tell me which one will do your job better for you. Sakshi has done it in ChatGPT. Manoj thinks Claude will do the best. How will you know? Achha, Sakshi, every time it's given the wrong result. Okay. Very interesting. It gave me current market price wrong. Okay. We don't need complex analysis in stocks. We don't need complex analysis in stocks. Okay. Gemini, it is great for data collection from Google. Yes. Okay. So, okay, we know this saying that we don't need complex analysis in stocks. Very interesting. I would take a bet between Gemini because of accuracy and Claude in terms of analysis. Maybe I can do both. So I will try. My advice is you need factual, huh? So my advice is, Sakshi, let's go on. Huh. So my advice is Claude first, because Claude ka analysis is very good, and Claude also has the web search, right? It can if you give it this one, it can do a good web search. And if you don't think that the stock it is accurate there, then you can go to Gemini, right? Let's try it. हम try करें थोड़ा. Okay, everybody, let's do this. Let's create a stock analysis. That's what Sakshi is asking for. Let's do a stock screening. Let's create a stock screening prompt in Claude. Give it the reference of the NSE website and give it the parameters that we have just mentioned to screen it. Okay? Then see कि क्या कर सकता है ये. Okay? Let's do this exercise. Everybody got the... So, write a prompt for screening stocks in Claude as per these parameters. क्या क्या था? P ratio और क्या था? Volume. Market cap. Volume and market cap. Any other parameter? I'm just writing it on the chat screen. Any other parameter? 52-week high or low. Okay, interesting. I'm remembering my CNBC days. 20 साल पहले I used to work for CNBC. Stocks बहुत. I used to work in a lot of these terms. 52-week high or low, right? I am not a stock market enthusiast. I don't work with stock market, but yeah.
पर मजा बहुत आ रहा है। अच्छा चलो, गुड। ऑल दीज पैरामीटर्स आर अवेलेबल इन स्क्रीनर ऑलरेडी। विच स्क्रीनर मनोज? विच स्क्रीनर डू यू यूज? गिव इट टू साक्षी। अच्छा, screener.in. Sakshi ji, you already have it. But let us try using this. इस exercise को करते हैं. Let's see. Screener पे क्या impact, मतलब कितना अच्छा करता है. Can we do this exercise? Yeah. Write a prompt for screening stocks in Claude. Claude का spelling गलत लिखा है मैंने. As per the parameters. ठीक है? So let me use Claude. We use Claude on. So let me share my screen. Okay, this is my Claude. In fact, artifact पूछ सकते हैं हम. New artifact है. Can be, yes, web search है. Okay. I want to create an app that screens stock in real time for me. And the parameters for screening are to be ratio, 52-week, high, low, volume. Can take the data. nsc.com, na? That is the place, right? Let's see. NSC India. nscindia.com. Okay. The web search है. Okay. Let's see. Data freshness dated within the last quarter. Okay. This is the new a new feature that has been launched in Claude. It's called artifacts. Right? Let's see if it works. It is already, ये देखिए अपना chain of thought already दे रहा है. What I'm doing, Sakshi, I'm trying to create an app where if I give a stock, it is going to give me its position. Let's see if this works. For real-time NSC data source, you have several options. Architecture.
integration code, set up your dev environment. Okay. This is the stock screener. आया? Okay, Vinod. Data is not up to date. Okay. And we'll say data is, it will not be up to date ना बाबा. उसके लिए तो आपको integration करना है real time. Be very difficult. This is mock data. Okay. Direct API integration. Here's how to integrate it. You need to connect to a authorized data provider. इसमें WebSocket, ये थोड़ा सा लो कोड इंटीग्रेशन है. Most reliable is this. Update a React component real WebSocket. ये ट्राई कर रहा है कुछ. Let's see. No, Vinod, the way that it works is that at backend आपको real time data से connect करना होगा, because यहाँ real time data it's difficult to get, but low code say we can do it. But here in Claude or Gemini or this one, you will give a weekly kind of a thing. You will not get a completely real time solution to this, is my understanding. अच्छा, विनोद ने ट्राई किया था. Let's try this one. ये Claude जो कर रहा है, let's see. Shall we create a solution? अच्छा नहीं. मतलब shall we create a solution where you give the name of a stock and it basically says whether it is a good buy or not at this point, and if it is, then why, and if it is not, then why. Is that a good product to do, at least at this level? Yeah. Yeah. WebSocket connection error आ रहा है इसका. This is high level low code kind of an integration that is happening. Let me just this over here. It's a very, very common way to chat with this one, where error आ रहा है तो मैंने बस स्क्रीनशॉट दे दिया है, वो डायग्नोस करके उसको ठीक करेगा. Meanwhile, let us use another one. Okay. I want to create where if I enter a specific stock, the engine tells me whether to buy or not, and why. Okay. Connect, get the data real time from NSE website.
Let's see. No. Yeah, this is getting into some real complicated thing. This is the last version. This is the latest version. But using demo data for live setup backers. तो ये real data से नहीं connect होगा, is my understanding. Somebody is chatting. Technical momentum filters. Okay. Yeah, so we are not doing coding at this point. We will be probably doing later on थोड़ा बहुत अगर जरूरत पड़ा, but we're trying to do this with low code, right? You have Sachin, you've done it with Perplexity Finance for GRSC. Interesting. ठीक है, but Sakshi, is this prompt working for you? Current price again not correct. I think it's the same thing कि real time price निकालने में इसका problem हो रहा है. We will have to connect it to like a real data source. Sorry. यहाँ दूसरा हमारा ऐप स्ट्रेटजी एक बार देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है. Claude is taking time. It is crashing a little bit. But let us see कि इसका स्ट्रैटेजी क्या है. अच्छा, ये हैंग ही हो गया है. Fully functional demo that shows exactly how it work. For demonstration I'll use simulated. यहाँ भी simulated ही है. Anyways, that's okay. Let's just go back. So we will have to, yeah, so simulation data is being used. So it's difficult. Sakshi is saying current price is not correct. Nice. Good problem. Good problem. I think the only way to do is that you build a system, and so you build a perfect system prompt ke through, you build a good system, and then you integrate it with a place, because this is so dependent on the current price. You integrate it with a data source जो कि एकदम current price stock market के time देता है, and I think this is what screener जो website इसने बोला, that's what it does. But yeah, that is how it is done. And most of these places don't. So this is something called you have to build a chatbot with Telegram, etc. We'll have to build the chatbot, yes, but we can build a chatbot with this one ChatGPT as well. All you have to do is to get the real-time data. That is pretty much all.
Cool. Yes, this is something that we need to do. We have to हमने बात भी किया था कि we have to build a prompt का library, right? So कोई भी prompt जो हमारे लिए ठीक काम करता है, one prompt at a time, we will have to test that and see कि वो prompt को हम और कैसे refine करें, right? So maintain prompt library by platform and task. So if you have a prompt library, I am imagining a prompt library like a sheet, Excel sheet, जहाँ each like you will have 3 tabs, one for GPT, one for Claude, and one for Gemini. And if I go to like a Claude, like a Chat GPT tab, उसमें task by task. So you have a particular task, उस task के लिए क्या prompt है? Second task उसके लिए क्या prompt है? Third task उसके लिए क्या prompt है? ऐसे करके आप maintain कर सकते हो, and then you can use that and reuse that and improve that, right? So आपका ये जो लाइब्रेरी है वो एक डायनामिक लाइब्रेरी बेसिकली हो जाएगा, and then this is basically something that you can use to save a lot of time. Every time you do a task, you don't have to write the prompt from scratch, right? So you should maintain prompt library, and you should A/B test critical prompt for important task. What is A/B testing? A/B testing is that कि एक ही प्रॉम्प्ट को डिफरेंट यूज, तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट होता है, राइट? सो एक ही प्रॉम्प्ट को डिफरेंट यूज केस में आप यूज करो, एंड देन सी कि कौन सा बेटर है, राइट? सॉरी, जस्ट अ मोमेंट, देयर आर सम। अच्छा, स्टॉक स्क्रीनिंग तो हम कर सकते हैं, बट व्हाट आई वांटेड इज टू मेक अ स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन पास्ट डेटा रिसर्च टू इन्वेस्ट इन द फ्यूचर। ये बात तो आपने नहीं बताया। दिस इज वेरी क्रिटिकल इनपुट, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल इनपुट कि you want to make a selection strategy based on past data to invest for the future, right, Sakshi? This is easy. So once you have the past data, you can make a strategy. Do you want me to go back and try this? Okay, everybody? Okay, cool. Strategy based on past data. This is not an app. This is basically, just clear up my new chat. पास्ट डेटा भी हम एनएससी से ही ले सकते हैं क्या? इस तरह कोई एक शीट देगा मुझे? इज इट पॉसिबल टू गेट अ शीट, a screenshot or a sheet of the latest stock numbers? Because I think NSC से वो नहीं ले पा रहा है डेटा।
I will need data sheet, some kind of a data, like a physical Excel sheet and stuff. Okay. Failed to fetch. NSE data driven इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी दे दिया है, ठीक है। Is this good, साक्षी? मानवेंद्र, एनएससी से ज्यादा ट्रस्टेड और क्या हो सकता है? We are just now looking at the strategy, money control website. हाँ साक्षी, is this good? This is the strategy you needed, right? वो बोल रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में टेक्नोलॉजी एंड आईटी सर्विसेज का 25% एलोकेशन होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी का 20 होना चाहिए, राइट? 15 होना चाहिए, बेस्ड ऑन इट्स एनालिसिस। फिर रिस्क इन्वेस्टमेंट अप्रोच वगैरह ये सब दिया है इसने। या दिस इज व्हाट यू वांटेड, राइट? एग्जीक्यूशन टाइमलाइन एंड हाँ, अभी मेराकी का थ्राइव टुगेदर क्लाइंट्स के लिए भी डाल दिया है इसने, क्योंकि ये मेरा है ना, दिस इज माय क्लॉड, दैट्स व्हाई इट हैज डन दैट। बट या this is something that it can do. Now you can ask it, you can say that, ye has it been based, is it based on, is it based on the latest NSE data? Can you confirm this? Yes, June 28 का उसने बोला है, याहू फाइनेंस एंड ट्रेडिंग व्यू डेटा से लिया है उसने। Cool. Okay, sure. Good, Sakshi. Yeah. So I was talking about the A/B testing, the critical prompts. So what A/B testing is basically कि आप एक ही यूज केस लो और उसमें दो टाइप का प्रॉम्प्ट ट्राई करो, राइट? एंड बेसिकली सी कि which prompt is giving the best results. That is A/B testing, not the one that I had said earlier. कि you take a specific, like for example, अभी ये जो साक्षी का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसमें हमने एक टाइप का प्रॉम्प्ट ट्राई किया and I documented it. I liked this prompt, so I documented it, right? And then I will also try another prompt, okay, and see if the result is better. If it is better, तो उसको हम लोग बोलते हैं A/B testing, right? हम लोग it is like optional kind of a using the whole optional thing, की option A, option B, and then testing them, right? And update this regularly as you go along. So that is how you maintain the prompt template library, right? So common pitfalls and solutions is to create something like this is hang on.
Sorry. So what is the common pitfall? Pitfall मतलब क्या कि what is the disadvantage of using something like this, right? कि इसमें क्या होगा कि inconsistent brand voice. So if you create, so कभी कभी क्या होता है कि there are inconsistent brand voice, right? तो उसका solution क्या है? उसका solution is that you need to create platform specific brand guidelines and example, right? एक एक प्लेटफॉर्म में एक ब्रांड गाइडलाइन मतलब एक ब्रांड गाइडलाइन सारे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं काम कर सकता है. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट? यू शुड हैव प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक ब्रांड गाइडलाइंस जो कि क्लॉड में कुछ चलेगा या जीपीटी में कुछ चलेगा या जेमिनी में कुछ चलेगा, राइट? सो दैट इज हाउ यू कैन एड्रेस द इनकंसिस्टेंट ब्रांड वॉइस. आप देखते हो कि आप एक ही ब्रांड गाइडलाइन को या एक ही रूल्स को आप तीनों में अगर यूज करो तो वो नहीं, दैट विल बी अ प्रॉब्लम, राइट? सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न, इफ दैट इज कंसर्न, तब वी शुड हैव अ टियर्ड इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क फॉर सेंसिटिविटी, right? Tiered information framework matlab there should be 1, 2, 3, 4 kind of a layer. First layer mein you can give in generic information. Second layer mein you can add some security, and third some more security and all of that thing. And then the whole AI system can be incorporated in that setting, right? This is generally a concern for corporations and enterprises क्योंकि वो sensitive data में बैठे हुए हैं, राइट? कॉस्ट मैनेजमेंट इश्यूज, आप इतने सारे प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं तो आप कॉस्ट तो होगा ही. सो इम्प्लीमेंट टास्क वैल्यू असेसमेंट मैचिंग कंटेंट टू प्लेटफॉर्म लेवल. तो कोई भी टास्क अगर आपके जो आप कर रहे हैं, यू विल नो कि ये पर्टिकुलर टास्क कौन से प्लेटफॉर्म या प्लेटफॉर्म से अच्छा से हो रहा है, एंड देन यू विल डू इट ओनली विद दैट प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म्स, एंड देन you will save cost rather than doing it with multiple platforms, right? Build centralized prompt management and platform optimization, so that centralized, this is again for companies, right, not for individuals, कि एक टीम ही prompt बेसिकली अगर ये एक एंटरप्राइज लेवल में हो रहा है तो एक पर्टिकुलर टीम जो सेंट्रलाइज टीम है वो ही प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट कर रहा है, राइट? और वो ही डिसाइड कर रहा है कि कौन को किसको कौन से प्लेटफॉर्म का एक्सेस दिया जाएगा. And that is how workflow integration problems will also be solved. So ये सब जो pitfalls है ये थोड़े enterprise level के मतलब concerns है. Personal level के concerns जैसे generally ऐसे होते नहीं है, right? Okay. I want you to start creating your own prompt library, right? Right after this session. मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, राइट? अपना प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी बनाना बहुत जरूरी है, राइट? कि कौन से टास्क के लिए आप कौन सा प्रॉम्प्ट यूज करोगे. एंड अभी जब हम लोग प्रॉम्प्टिंग सीख रहे हैं, हम लोग प्रॉम्प्टिंग अभी नेक्स्ट वीक से वी विल स्टार्ट talking about the structure and everything. So I will also ask you, मैं कभी भी किसी से पूछ सकती हूँ, and you can always, आप तभी भी आंसर कर सकते हो जब आपने इसको टेस्ट किया है. So keep using your prompts and saving your prompts that are actually working for you, right? So start using, start creating your prompt library, okay? You test your optimized prompts by recording the output, and then response quality kaisa hai, structure and organization. This is a very, very systematic way to see कि कौन सा prompt कहाँ अच्छा से काम कर रहा है. And then these questions can be asked. How to save prompts? Manoj, you just copy and paste and put it in like a sheet. Simple. Yes, Sachin answered. Yeah. Should we create a website to have all prompts using Lovable? Such managing a website and managing an Excel sheet is easier, right? अपने personal productivity के लिए, I think managing an Excel sheet is good. But if you want to create a website, you can obviously do it. You can also create an app like using Claude. You can do it as an exercise. Absolutely, you can do that. We have some examples and case studies of Indian corporations who are actually using multi-platform integration.
there is TCS, there is Flipkart, there is ICICI Bank, and then there is Tech Mahindra, centralized form management system is there. And we also have some solutions like Prompt Flow, LangChain, and Flowwise AI, where multi-platform management tools are used, which is uniform interfaces across platform, right? And that is something which is a near future of platform integrations, right? We will talk about that later. प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइजेशन मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म कब यूज करना है, दैट्स प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइजेशन. उसका बिजनेस इम्पैक्ट बहुत हाई है. दीज आर सम ऑफ द पीपल जिसने रिसर्च करके ये बताया है कि 40% फास्टर कंटेंट क्रिएशन होता है. स्टैनफोर्ड ने बोला कि 35 to 45% हायर आउटपुट क्वालिटी होता है. फॉरेस्टर ने बताया कि 52% बेटर रिजल्ट्स विद कस्टमाइज्ड प्रॉम्प्ट्स होता है. एंड डिलॉयट ने बताया कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस से हायर आरओआई होता है. So more structured you have, then and more science you have to your approach towards generative AI, the better it is, rather than a random approach. Ultimately, इसी को हम बात कर रहे हैं. Right? At this point, let me just for corporate having website will be useful. Absolutely. At this point, let me just stop the class because most of the points are covered. Any questions that you have on whatever we covered today, and any project work जो आप कर रहे हो, that would be, you can ask it right now. So every platform, ये 3 प्लेटफॉर्म जो हमने बात किया, GPT, Claude and Gemini, तीनों के पास there is a prompting guide. You go to the resources, उनके resources section में तीनों के पास there is prompting guide. How to write a prompt for that particular platform, तीनों के पास है. ठीक है? I want you to go through these 3 prompting guides. Please ask Perplexity. You will get it immediately. And go through the prompting plan, study it, and check the nuances कि कैसा different है ये. Some things are similar, some things are very different. But you must study the prompting guides for all these platforms. Is that okay? Good to know, Sachin. That's the whole idea. I need to show the screen to you, which is the referral screen. In case you want to refer to anybody about Career24 courses, there are prizes to be won. And you can scan, refer, and on. Okay. Tomorrow we will be looking at some specialized content tools and then compare the output and see कौन सा अच्छा है आपके लिए. Okay. We know this saying that he did not get any referral amount. I hope you followed the due process, Vinod. May Vada. Because there is a process to be followed.
Okay, Vinod. I will also pass your concern to the team. Okay. Everybody's doing their projects. Any questions on the project? Any specific question on the project? We will take a few questions, then we will end. The poll is open. Please give response to the poll. It will help me improve my sessions next time. Any questions? Has everybody finished their project? खत्म हो गया क्या? Please submit कर दो. खत्म हो गया आपका project? 3 projects. Varun is saying yes. You've submitted, Varun. Anyone else who's finished all the 3 projects? All the windows are now. You just have to all the cameras, webcams are just off. Sanchit, नहीं, Sanchit, please complete करके submit करो. Try to make your project a single document project. Don't make multiple documents of the project in submission. आपके हर submission में एक ही document होना चाहिए. मतलब हर project के लिए एक document का submission होना चाहिए. Okay? Varun, did you understand that? I hope you've done it like that. Okay. तीनों अगर 3 डॉक्यूमेंट होंगे आपके पास, 3 सबमिट कर दीजिए अगर हो गया है तो. Any questions? Any questions anybody has on the project? Please do your projects. Don't wait. I can just see Varun who has completed the project, and I was hoping that everybody else should be able to do it. If you want to take some time, if you think that you need to learn some more before doing the project, then you can absolutely do that, because you've not yet done prompt engineering. So if you want to take, but the project may without detailed knowledge of prompt engineering also you can do it. ऐसा कुछ नहीं है. And you all know, actually you've been doing prompting from some time right now, तो थोड़ा बहुत prompting आपको आता है, right? So in case you have finished it, please submit it. Okay. 64% are participated in the poll. Let's have some more people participating, please. Okay. Okay. Good night, everyone. See you tomorrow. Bye-bye.